So hello everyone, my name is Animesh Jain and I have secured rank 63 this year in UPSC CSE. So we are starting a free series where we will be telling you the templates which we can use in various GS papers to write our answers. देखिए most times what happens is that we have the knowledge but when we go and apply those knowledge in the actual exam like conditions, we are not able to generate the points. So to help in such cases, this is our series. And every day there will be 2-3 videos for each and every syllabus points. So today we are starting with the art and culture part. ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की PYQs देखेंगे then we will realize that there are certain themes which get repeated and for such themes we can have a fixed template. For example, यहाँ पे हमने first theme देखा कि they generally ask contribution of some dynasty to architecture. So अगर इस तरह के क्वेश्चन में if we have 5-6 broad dimensions ready, सो हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स रखने होंगे उस स्पेसिफिक डायनेस्टी के एंड जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो हम लोग सेम रख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टेम्पलेट देखें विच इज असेसिंग द डायनेस्टिक कंट्रीब्यूशन टू द आर्किटेक्चर. तो उसमें क्या डायमेंशन हो सकते हैं? आर्किटेक्चर में हम लोग फर्स्ट बात कर सकते हैं आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें हम लोग टेम्पल्स की बात कर सकते हैं, नगर आर्किटेक्चर, द्रविड़ आर्किटेक्चर है ना, स्तूपास की बात कर सकते हैं अगर बुद्धिस्ट में जाएँ, पिलर्स की बात कर सकते हैं, केव्स की बात कर सकते हैं. तो रिलीजियस में ये 4 तरह का जो है आर्किटेक्चर हो सकता है. सेकेंड डायमेंशन इज टाउन प्लानिंग. ठीक है, उसमें अगर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, वेदर देयर वाज अ टेम्पल टाउन है ना, कॉन्सेंट्रिक, जैसे चोला के टाइम में देयर वर कॉन्सेंट्रिक वॉल्स आउटसाइड द टेम्पल्स, सो इट इज नोन एज टेम्पल टाउन. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज टाउन प्लानिंग. दिस कैन बी द सेकेंड कॉम्पोनेंट. थर्ड कॉम्पोनेंट इज व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड इन द आर्किटेक्चर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत, वी विल टॉक अबाउट arch and dome structures. We will talk about tombs, right? So those things come under the engineering part. In material, we talk about granite, sandstone, what things they have used. In Mauryas, we will talk about timber in the Mauryan palace, like that. Fourth one is public works. तो यहाँ पे great bath, for example, in the Indus Valley. ठीक है, ports हो सकते हैं, granaries हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें हमारे public works में आता है. Then we can have royal structures. For example, if we are talking about Vijayanagara, so we have heard about this Mahanami Dibba, है ना, which was a place where king used to stand to salute his army. So all those structures, है ना, where king resides and all, those things are known as the royal structures. And finally, we can have water management structures. So यहाँ पे canals हो सकती हैं, irrigation channels हो सकते हैं. So all these things will come here. So the idea behind this particular framework is that generally when we talk about contribution of some dynasty in architecture, we generally get stuck after writing one point, that is religious structure. And then we keep repeating those points in different example format. But here we can generate 6 dimensions and then specifically we can see कि कौन से केस में कौन सा एग्जाम्पल जो है वो फिट इन हो रहा है. एटलीस्ट डायमेंशंस हमारे पास प्री प्लान हो सकते हैं. तो सम एग्जाम्पल्स इफ वी सी. सो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, इवन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द कंटेंट फॉर दिस. आप सिंपली वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड का, ताकि वी कैन कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. सो इंडस वैली में अगर हम लोग देखें रिलीजियस स्ट्रक्चर, सो देर आर नो टेम्पल्स बट देर वी फाइंड ग्रेट बाथ विच माइट हैव बीन यूज्ड फॉर द रिचुअल बाथिंग पर्पज. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. प्लानिंग में वी ऑल नो ग्रिड पैटर्न था, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थे, रेशियो इज 4:1 है ना, दे वर प्रेजेंट इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा. देन इफ वी सी व्हाट मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सो बेक्ड ब्रिक्स वर देयर, engineering precision was there. ठीक है, public works में there was city wide drainage network, granary has been found at Harappa. ठीक है, next royal structure में there is no palace but we find citadel and lower town on the western and eastern flank of the city, right? So एक तरीके से वो जो है citadel it was for the royalty. Then water management में we find धोलावीरा में step wells हमें मिलते हैं. ठीक है, water harvesting structures वगैरह मिलते हैं, great bath वगैरह है, again same idea. So this is how है ना we can generate, we can fix examples for the Indus Valley in the given template. ठीक है, एक और देख लेते हैं क्विकली. सो अगर मान लीजिए ये आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो. सो दिस इज फॉर द मौर्यन डायनेस्टी. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर द गुप्ता डायनेस्टी. अच्छा, इन सम ऑफ द स्लाइड्स यू विल सी दैट द कंटेंट इज लेस. दैट इज बिकॉज हम जो हेड्स यहाँ पे देख रहे हैं टेम्पलेट के, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दोज थिंग्स आर फाउंड in this particular dynasty which we are talking about. So in those cases, instead of writing
No, nothing found. I have just removed that particular row from the slide. That is the idea. Okay, Pallava again you can see. You can note down the specific examples here. This is for the Chola. So in case of Chola, we have Dravida style. If we talk about religious structure, some specific temple name, Brihadisvara Temple, Gangaikonda Cholapuram. Planning mein temple town planning, concentric enclosures were there around the Garbhagriha. Material mein granite was used. They used 80-ton capstone in temples of Thanjavur. And public works mein there was tank and canal irrigation system developed over the Kaveri. Okay, this you can see for Vijayanagara. And this is finally for the Delhi Sultanate. So here again if we see, हम लोग कुछ specific words का use करेंगे religious structure में mosque, some examples, minars, tombs, dargahs, decorative features. Planning में new capitals were there. ठीक है, materials में arch and dome structures. Public works में canals by Firoz Shah Tughlaq. ठीक है, sarais were there. Royal structures में Firoz Shah Kotla, Tughlaqabad Fort. Water management we have Hojkas Reservoir. So like this, we are going to cover each and every topic in the upcoming videos. Thank you.